and it's a huge ground, let me tell you. It's huge, man. Crazy. पैसा वसूल हो गया यहाँ के यार. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी. Imran Khan is there. Correct. Well done. Yeah. Shane Warne is the spinner in between the two yellow shirts. Yes. Now, who's the bloke like this? Muralidharan. Yeah, Muralidharan. 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 Can't miss with that action. No, not at all. It's here the day that- This is a bird's eye view for the MCG. Oh my god. Amazing. Nice. बनाया नहीं जाता क्योंकि ये क्रिकेटिंग ग्राउंड जो है फुटबॉल के लिए भी इस्तेमाल होता है, रग्बी के लिए भी इस्तेमाल होता है और एक बहुत मशहूर स्पोर्ट्स है ऑस्ट्रेलिया में जिसको फुटी कहा जाता है, जो अमेरिकन फुटबॉल और रग्बी के कुछ मिले जुले रूल्स के मुताबिक है. उसको पाँव और हाथों से खेलते हैं, तो वो भी उसके लिए भी ये ग्राउंड इस्तेमाल होता है. क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता. tunnel, if you like, was used by the Pakistan team to leave their change room up the race onto the ground. 1,04,000 लोग यहाँ बैठे हुए हो. यू कैन इमेजिन कि कितना शोर होगा और अभी इतना ही सन्नाटा है. वी कैन से वी फ्रॉम इमरान खान कंट्री. Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke, gun smoke, gun So these lights are working like a sunlight. Yes, exactly. So, fantastic photo. Two brilliant cricketers together. Sadon in his playing days, and he's with the brilliant Sachin Tendulkar, now retired. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जो पिच है वो बाकायदा बाहर से लाई जाती है. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी. आज से तकरीबन 150 साल पहले ये ग्राउंड ऐसा दिखता था एमसीजी का. अमेजिंग, बहुत अमेजिंग. अलग ही एक्सपीरियंस है आने के बाद. Ponting, Alan Border, Gavaskar, Tendulkar, they're not. ये उन लोगों के नेम्स हैं जिन्होंने यहाँ पे आके 100 किया है, या मैनी पाकिस्तानीज. तो मेरी मोहब्बत क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस व्लॉग देखने के बाद आपकी जो क्रिकेटिंग नॉलेज है, जो क्रिकेटिंग लव है, जो आपका प्यार है क्रिकेट के लिए, उसमें मज़ीद इजाफा ज़रूर हुआ होगा. क्या बात है. Many achievements, one special. First player to make 400 runs twice. वाह. अब हमें उस एरिया लेके जा रहा है जहाँ पे स्पोर्ट्स मैन या जो प्लेयर्स होते हैं उनका मसाज होता है या स्पा होता है या रिलैक्स करते हैं. मैं तो कुछ और ही समझ रहा था. The last cricket match, Australia-Pakistan. For each day's play, the people produced a daily fact sheet. और हम हैं टेकब्लेड. सब्सक्राइब टेकब्लेड. और हम पहुंच गए एमसीजी क्रिकेट ग्राउंड के बहुत करीब और आप रोड्स के ऊपर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है आज सुबह से और सर्दी बहुत बढ़ गई है. इस वक्त तकरीबन टेम्परेचर यहाँ पे दोपहर को 1:30-2 बजे 12 डिग्री हुआ हुआ है और शाम में दिखा रहा है कि ये 7 या 8 डिग्री तक भी चला जाएगा रात में. और आहिस्ता आहिस्ता अब हम देख सकते हैं कि उबर वाला जो है वो मुझे करीब लेके पहुँच गया है इस एमसीजी ग्राउंड के. और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम टू विज़िट एमसीजी और मुझे लोगों ने ज़रूर कहा कि भाई इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया जाओ, मेलबर्न जाओ तो एमसीजी का विज़िट ज़रूर करना. तो इसलिए नाउ आई एम हेयर और अब आप देख सकते हैं कि एमसीजी का ग्राउंड बहुत हमारे करीब आ गया है और अब हम पहुँच चुके हैं एमसीजी ग्राउंड. और आप देख सकते हैं कि ये इसकी एंट्रेंस है. गेट नंबर 3 से हम इंटर करेंगे और इसके अंदर जाएंगे और देखते हैं मज़ीद अंदर हमारे साथ क्या होने वाला है. अगर इस व्लॉग को मैं एज इट इज़ अपलोड करूं बगैर एडिटिंग के तो शायद ये घंटों के ऊपर मुहित हो जाएगा व्लॉग. तो जल्दी जल्दी आपको बहुत सारी क्लिप्स दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मौजूद है और मुझे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें अट्रैक्ट करी और क्या पसंद आया. जो बर्ड आई व्यू है मेलबर्न का, एमसीजी का, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का, दैट इज़ ऑसम. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम. दिस इज़ सैयद अली यूसुफ ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेकब्लेड ग्लोबल. और आपको पता है कि हम व्लॉग नहीं बनाते, हम टेक व्लॉग बनाते हैं. लेकिन आज जो व्लॉग हम बनाने वाले हैं
तो मैं उम्मीद करता हूँ स्पेशली हमारे सब्सक्राइबर फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, बांग्लादेश, उन सबको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि मैं मौजूद हूँ इस वक्त मेलबर्न में, और मेलबर्न में हमारा चाहने वाला नंबर 1 गेम क्रिकेट ग्राउंड में, और वो क्रिकेट ग्राउंड है MCG क्रिकेट ग्राउंड, जिसको MCC भी कहा जाता है। और यहाँ पे अभी हम इंटर होने लगे हैं, आपको दिखाते हैं म्यूज़ियम और MCG। और हमें ये यहाँ पे ये पास मिला है, और ये एक टैग सिस्टम मिला है, इसको हमें वियर करना होगा ताकि आगे चल के हम जहाँ भी इंटर होना चाहें वहाँ पे हम इसको टैग कर सकें। तो स्टे ट्यून विद अस। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टेकब्लेड नाउ, एंड वेलकम टू MCG। एंड टेकब्लेड मौजूद है ऑस्ट्रेलिया में। आज है बेसिकली वी आर फ्रॉम पाकिस्तान बट लिविंग इन दुबई। So this is our first time here in Melbourne. Oh, right. Yes. How long you are here? This is my 16th year. 16th year. Oh wow, 16th year. And how do you find working here? Oh, it's good. Uh-huh. I'm glad you told me you were from Pakistan because the big trip thing is you get a lot of people from India and you look at them and you might say to them, oh, are you from India? And they say, no, I'm from Sri Lanka, or I'm from Pakistan, or I'm from Bangladesh. Or, you know. So I don't do that now. I used to say to people, where are you from? We can say we from Imran Khan country. Yeah. So how about you are also a cricket fan, or you are just working? Oh no, I've been into sport all my life, cricket and football. Cricket and football. And football. Have you had a look at the Australian football? Yeah, footy, Australian footy, yeah. Umpiring's pretty crap. Okay, that's nice. But I'll tell you what, young fella, up on the ceiling there, on the orange roof, Okay. they're the original rules for Australian rules football from 1859. ये MCG का हमारे पास 2 व्लॉग्स बनेंगे, एक MCG ग्राउंड का और इसके अंदर का, जितने भी इन्होंने हॉल ऑफ फेम्स वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं, जो जितने भी लॉन्ग रूम हैं, कॉर्पोरेट रूम है, VIP रूम्स हैं, जो MCG का रियल एसेंस है उसका व्लॉग है। और उसके बाद एक व्लॉग हमने एक और बनाया है, उसको भी ज़रूर वॉच कीजिएगा, आने वाले दिनों में हम अपलोड करेंगे। वो होगा MCG के म्यूज़ियम का व्लॉग, और उसके साथ साथ शेन वॉर्न का एक स्पेशल वीडियो पैगाम है, और एक जनरेटिव AI के बेस के ऊपर एक शेन वॉर्न की स्टोरी शेन वॉर्न खुद सुना रहे हैं, और वो बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो लोग हमारा ये व्लॉग देख रहे हैं वो आने वाला व्लॉग भी ज़रूर देखेंगे। तो स्टे ट्यून विद टेकब्लेड, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेकब्लेड, और इस व्लॉग को और मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये हमारा MCG का टूर शुरू हो गया है, और ये जॉन है, ये हमें लेके जा रहे हैं, गाइड करेंगे, बताएंगे। All right. Now, as Beryl said, thanks for coming along. Who's been to the ground before? No one. No one. Have people seen the ground on the television? Only on the television, yes. Only on TV. All right. Well, I can say anything I want, can't I? Now, as Beryl mentioned, please take as many photos as you like. We've got really good access. Places that you don't normally have access to. Really good access. Any questions, I'll give it a crack to answer. It's in the sun. We need to keep the grass healthy, growing. Otherwise, we'd have to replace the grass more often. So these lights are working like a sunlight. Yes, exactly. So, and that is very expensive to replace grass. Must be. Now, this side of the ground also, at this time of year, on a sunny day, is in shade. That's why they needed this side of the ground. All right, now, tour started in a public area, and through these gates we're entering members. Okay. All right, so we're in some members and some public areas during the tour, and I'll keep you up to date with that. Sure. You can tell with the goalposts either end, football is played lengthwise, cricket across the ground. Now tell me, who's keen on Australian rules football? Beautiful ground, you can see. It's amazing. ये रेड लाइट जो लगाई हुई है क्योंकि सूरज नहीं निकल रहा था 2 दिनों से, तो ये ग्रास को ट्रीट करने के लिए, ताकि ग्रास ख़राब ना हो। और अब आप देख सकते हैं सनलाइट आ चुकी है कि 2 दिन से मेलबर्न में बारिश हो रही थी। एंड इट्स अ ह्यूज ग्राउंड, लेट मी टेल यू, इट्स ह्यूज मैन, क्रेजी। पैसा वसूल हो गया है यहाँ के यार।
अमेजिंग। आप देख सकते हैं बारिश हुई हुई थी अभी भी आधा घंटा पहले, तो इट्स ऑल वेट, स्लिपरी भी है। यहाँ पे हर आधे घंटे बाद एक ग्रुप लीड कर रहे होते हैं लोग। सो नाउ वी आर इन, वाओ। जो यहाँ पे ग्रास दिखाई गई, मैंने आपको शुरू में दिखाया कि जिस तरीके से ग्रास को ट्रीट किया जा रहा है, उसके ऊपर आर्टिफिशियल सनलाइट, ये आप देख सकते हैं रेड कलर की, पर्पल कलर की लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त विंटर है। जुलाई का सीज़न है ऑस्ट्रेलिया में, जून का इख्तिताम हो रहा है, जुलाई आने वाला है और बहुत ज़्यादा विंटर है, बारिशें हो रही हैं। और एमसीजी का वेदर सुबह कुछ होता है, शाम कुछ होता है। पूरे मेलबर्न का जो इन्वायरमेंट है, जो वेदर है, बिल्कुल ऐसे ही है। सुबह धूप निकली होती है, दोपहर में बारिश, या दोपहर में धूप है तो रात में बारिश, इस तरीके से वेदर चेंज होता है। तो यहाँ पे इन्होंने आर्टिफिशियली मैनेज किया हुआ है कि सनलाइट प्रॉपर उस ग्रास को मिले। और शायद जो लोग क्रिकेट से प्यार रखते हैं उनको उस बात का अंदाज़ा हो कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जो पिच है वो बाकायदा बाज़ार से, बाहर से लाई जाती है। बाज़ार में कह गया, जज्बात में, मतलब इस ग्राउंड के बाहर से लाई जाती है और उसको फिक्स किया जाता है, अलग से लेके आगे उसको फिक्स किया जाता है, उसके ऊपर बाकायदा बनाया नहीं जाता, क्योंकि ये क्रिकेटिंग ग्राउंड जो है फुटबॉल के लिए भी इस्तेमाल होता है, रग्बी के लिए भी इस्तेमाल होता है, और एक बहुत मशहूर स्पोर्ट्स है ऑस्ट्रेलिया में जिसको फुटी कहा जाता है, जो अमेरिकन फुटबॉल और रग्बी के कुछ मिले जुले रूल्स के मुताबिक है, उसको पाँव और हाथों से खेलते हैं, तो वो भी, उसके लिए भी ये ग्राउंड इस्तेमाल होता है। अमेजिंग, बहुत अमेजिंग, अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ आने के बाद। Visiting cricket team. Last Boxing Day test, this area here, this tunnel, if you like, was used by the Pakistan team to leave their change room up the race onto the ground. Australia, there's another tunnel about 30 metres ahead. Okay. Football, the same, one team this side, the other team that side. From an access point of view, so that gives you just an idea of the passes accreditation that people need to have to be in this area. Okay. Exactly the same. There's one important difference for cricket. The visiting team for cricket will always use this room. Currently, it's set up as it was yesterday for the Melbourne football team. Okay, we'll head through. So now we are going in for the dressing room. जो भी विजिटिंग टीम होती है उसका ड्रेसिंग रूम ये होता है, और अभी करंटली कोई फुटबॉल टीम यहाँ के उनके हिसाब से इसको सेट किया हुआ है। Straight away, I'll explain the difference in the two rooms. Okay. The cricket, always the visiting team. The back wall, the honour board, make 100 runs for your country. ये उन लोगों के नेम्स हैं जिन्होंने यहाँ पे आके 100 किया है, या मैनी पाकिस्तानीज़। यहाँ आप देखें पाकिस्तान से आपको मोहम्मद आमिर नज़र आ रहा है, उसके बाद ऊपर आपको दानिश कनेरिया, शोएब अख्तर, फिर उसके ऊपर आपको वसीम अकरम, और ओल्ड टाइम्स में जाएं तो आपको 1983 में अब्दुल कादिर, दैन पाकिस्तान का दोबारा सरफराज नवाज़, और फिर दोबारा पाकिस्तान आपको इमरान खान नज़र आ रहा है 1977 में। ये अब जिस रूम में हमें लेके जा रहा है, इट इज़ कॉल्ड कोचेस ब्रीफिंग रूम। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, 2 बजे हमारा टूर स्टार्ट हुआ था, आधा घंटा गुजर चुका है। Take a seat if you like. Whatever the sport, the coaches might show vision on the TV screen. This is a footy field, so the coach might write names, crosses, arrows, all to do with tactics. Now the coaches are always happy. Break in play, come back for. अब हमें उस एरिया लेके जा रहा है जहाँ पे स्पोर्ट्स मैन या जो प्लेयर्स होते हैं उनका मसाज होता है, या स्पा होता है, या रिलैक्स करते हैं। This is where the players would attend. It's dressed up for the purpose. Physio massage. This is where some players need to have like ankles strapped or taped, maybe their shoulders, just to prevent injury. These are the ice baths. Players, coaches might have little ones, perhaps babies that need minding. So this can be dressed up, prepared like creche or daycare.
That's why it's referred to as a family room. Series of rooms for our friendly drug testers. Now, footy and cricket have a similar drug policy. That is, should not take anything that you're not allowed to. If you do, you'd get found out with drug testing, which happens soon after the game at random. So you don't know if you're going to be tested or not. I must say that it's very rare to have a positive test. But to guard against it, we conduct. A great example yesterday. Unfortunately, a player suffered a heavy knock to the ribs, severe pain, brought down to this room to be checked out. They decided to call an ambulance. An ambulance pulled up just outside the room, transported the player to hospital. Unfortunate, but it does happen. So it was suspected that the player had suffered cracked or broken ribs, which would be very painful. Now, important question. We're going to start heading up high. First stop, indoor cricket centre. Then I'd love you to see the cricketers' view rooms. Then after that, up high, a bird's eye view of the ground. Now, I need to know though, is everyone comfortable using lifts? Yeah, We all good? all good. Okay. Now, we're underneath the Bill Ponsford stand. There's a photo of the gentleman. Lived a long life, played alongside Sir Don. Many achievements, one special. First player to make 400 runs twice Wow. in first class cricket. That was a long time ago. For this area, there is a high amount of cricket, or this is not for common people? This is for the cricketers. This is for the cricketers only. Area. Okay. Yeah. And Like- coaches. Okay. Retired cricketers and No. Current. current cricketers. The actual Okay. players. Cricket view rooms at the MCG are extremely unique. I'll explain why. The room we walk through will always be used by the Australian team. Okay. Right next door, the visiting team. No thick wall between them. They share the players' balcony. Oh, that's what makes it unique. Shared. Cricket's a friendly game, isn't it? Everyone gets on well with everyone. Yes, most of the time. Most of the time. Most other cricket stadiums, there's a location for home team, separate for visiting team. But here at the MCG, it's shared. Last test, Australia, Pakistan. Next test, Boxing Day test, Australia, India. Next year, Australia, England. All big events. In front of the players' balcony, a small gated area, family and friends of the players. The wicket falls, normally the next batter is waiting up here. Wicket falls and the batter takes these steps, green steps, onto the ground, replacing the batsman dismissed. Two ways to the change room. This is a bird's eye view for the MCG. Oh my God. Amazing. Bird's eye view of the ground. So for footy, play down the ground, centre of the ground, centre circle, dug up, bring those cricket wickets onto the ground, play cricket across the ground. No restricted viewing. It's amazing view. Amazing. You'll find one red seat. Got it? Yep. Cricket. The batter. 1,04,000 लोग यहाँ बैठे हुए हो तो यू कैन इमेजिन कि कितना शोर होगा और अभी इतना ही सन्नाटा है अमेजिंग Play features two brilliant cricketers together, and another one is a life-size statue of another brilliant cricketer. I don't think you'll have any trouble identifying them. Fantastic photo. Two brilliant cricketers together. Sir Don in his playing days, and he's with the brilliant Sachin Tendulkar, now retired. They're together celebrating Sir Don's 90th birthday. There's only 4 other copies of this photo that exist. The reason they're together, quite often Sir Don would say, not a tall player, but Ricky Ponting, Alan Border, Gavaskar, Tendulkar, they're not tall. The people in the library for every sport
whatever it is, whoever the competing clubs or countries, they produce a fact sheet. For cricket, the last cricket match, Australia-Pakistan, for each day's play, the people produced a daily fact sheet. It gives you history of previous tests between Pakistan and Australia. All available on the website. The media come in, grab a copy, helps them with their commentary. Football the same, that's the most recent one. So hard to beat. Best batting Cowper, 307 in the mid-60s. The other two, Sarfraz representing Pakistan, the best by an international bowler. I was here for that. That included 6 for 1. Extraordinary performance. And the bottom one is Alistair Cook, so the best batting by an overseas player. We couldn't get him out. 244 not out. And Melee is from Australia? Which one? The first one. Arthur Maley, yeah, 100 years ago. 100 years ago, yes. And Bob Cowper, Australian. And the second one, Sarfraz Nawaz, Pakistan. Yeah, for Pakistan. I hope you recognise Yes, the name. yes. All right, let's head this way. ये एमसीजी में जो बेस्ट परफॉर्मेंस रही हैं 2 बॉलर्स की और 2 बैट्समैन की वो आज तक इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है. Excitement, noise to the ground. It's a fantastic atmosphere. Whatever country is visiting, it's a beautiful detailed painting. And back to the lifts, we're nearly done. Level 2. It is really important to the Melbourne Cricket Ground. It's our first permanent display representing women's sport. And that's what makes it special. In 1838, by 5 gentlemen, we have portraits of 4. Good news, anyone can become a member, but patience required. Now, appreciate if you're not living in Melbourne or Australia, you're not likely to join the club, but we have over 5,000 members who do live overseas. Now, recently, 2 months ago, we were presented with our second grandson, and I had one job. Get baby Billy on the waiting list. He joined the waiting list. He was 1 day old. He's waiting about 16 years to become a member. वाह. Anyone can join. आज से तकरीबन 150 साल पहले ये ग्राउंड ऐसा दिखता था एमसीजी का. 1895 March. Portraits of past presidents and secretaries. Upstairs, dining facilities. Middle of the room, lots of cricket memorabilia. Again, it's a room that can be privately booked. Example, lots of wedding receptions here. So this room is especially when some president, prime minister. No, actually, the seating outside of the committee room is generally where they are, the VIPs. Okay, the VIPs is at that. Just to the left. Just to the left. Okay. Just to the left. Okay. All right, so this is our long room. Long room. $50. Folks, I think I get really good value. This is my second home. I love the footy, I love the cricket. I'm here a lot. So $830 annually? For 12 months. For 12 months, yes. And every year need to be paid this. It gets renewed every year. Or this is for the membership for the lifetime? It's 830, which is normally indexed to CPI. Okay. So there's probably a CPI gain each year. Okay. Yeah. Oxford the batter, stand named after him. The Pope called in to see us, that's acknowledged. Australian football. Australian sprinter Freddie Cuthbert winning gold in the Olympic Games. This one features Sir Don Bradman. These are his scores at the ground above 100. His best score was 357. Not Test cricket. If it was, it'd be on the wall. It beats Cowper's 307. On average, Sir Don made over 100 runs at the MCG, on average. आज यहाँ एमसीजी आके एक बात का एहसास तो और बावर हो गया, वो ये कि इंसान जब अपने बेशुमार टैलेंट का मुजाहरा करता है
तो उसको हमेशा हमेशा याद रखा जाता है, ख़्वाह वो उसे गुजरे हुए हज़ारों या सैकड़ों साल ही क्यों ना गुजर चुके हों। आज आप देख रहे हैं हमारे एमसीजी के सामने यहाँ पे कितने लोगों के हॉल ऑफ फेम में पिक्चर्स लगी हुई हैं जिन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं इस एमसीजी ग्राउंड के ऊपर, भले वो 1870 की कोई बात हो रही हो या 1905 की बात हो रही हो या 1979 की बात हो रही हो, 1969 की बात हो रही हो। ये जितने भी प्लेयर्स हैं शायद आज की जनरेशन्स को इनके नाम तक ना पता हो, जैसे सरफराज नवाज़ हैं या डॉन ब्रैडमैन हैं, इनके आई डोंट नो जो बहुत ज़्यादा क्रिकेटिंग नॉलेज रखते हैं शायद उनको तो अंदाज़ा हो इन नामों का, लेकिन नॉर्मल क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को इनका नाम का नहीं पता होता। लेकिन यहाँ आकर जब आज विज़िट किया है तो मेरी मोहब्बत क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस व्लॉग देखने के बाद आपकी जो क्रिकेटिंग नॉलेज है, जो क्रिकेटिंग लव है, जो आपका प्यार है क्रिकेट के लिए, उसमें मज़ीद इजाफा ज़रूर हुआ होगा। 1850s, 1860s. As you move your way to the right, it's a timeline. Old stands long gone. American flag were in World War II, no sport. The stadium was used as a camp for American and Australian defence. Oh, okay. Further along, we're in 1956, the Olympics. Light towers switched on in the 1980s. Oh. And finally, the early 2000s, we'd been here for 150 years. That's the reason this was made, to celebrate. Top half Australian overseas cricketers, the bottom half mostly Australian football, soccer's represented, and rugby. Now, lots of people can identify players without checking these plaques. So I know that there's some Indians, some Pakistan, West Indies, England, the whole box and dice. Yeah, I can see that Imran Khan. There you go. Yeah. See, he stands out, Yes, doesn't he, Imran with Khan. his action. Yes, with his actions. Good pick up. Yeah, Imran Khan is there. Correct. Well done. Yeah. Shane Warne is the spinner in between the two yellow shirts. Yes. Now, who's the bloke like this? Muralidharan. Yeah, of course Muralidharan. it is. Muralidharan. Muralidharan. Can't miss with that action. No, not at I all. was here today to really acknowledge that you've come from a long way, whether it's interstate or from overseas. To think that part of your time in Melbourne, Australia, you've decided to spend a little bit of time at the Melbourne Cricket Ground. Really appreciate that. Thank you. So continue to travel safe, enjoy your time in Melbourne or Australia, and let's travel safe. Thank you. Thank you Thanks so so very much much. for coming along. Thanks, John. Hope you've enjoyed it. Sure. We did. Very welcome. All Thank right, you. now for those people